I think the Mirrors Fellowship is a particularly exciting part of our work because it really opens up the imaginations around masculinities, and as it did the first year, it also did in the second year. We had an amazingly overwhelming response from artists across the country who wrote to us in different languages, were able to express their vulnerabilities and made us rethink our own framing around masculinities. I think this was a few weeks before pandemic. I wrote this in a poem. I love, like it is the only thing needed to survive in this country. तुम्हारा हरा, नीला, देश रंगीला, लेकिन हमारा काला. तुम्हारा लाल सलाम, हमारा काला. You know, I always talk about the intricacies of it. Okay, if that place is known as the informal kind of a settlement, underneath it is also a class of people, and within that class of people there are not only sex workers, not only trans people, but also laborers, also the working class, also these migrants that come from Bangladesh, because there is CA and RC happening. So within that context, I don't want to be like, ye aadmi hai, ye aurat hai. A lot of gender identification is also informed by the NGOization of it. My understanding of mask is that I know that there are some section of Dalit men who are killed precisely because they are masculine. मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है आई थिंक स्पोर्ट्स में, और तो मैं उस जर्नी में रही, और फिर किसी ना किसी वजह से मुझे वो जर्नी छोड़नी भी पड़ी. इस जर्नी में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, मैं रनिंग नहीं कर सकती, मैं इस तरीके के कपड़े पहन के नहीं जा सकती, या कहीं टूर्नामेंट है तो वहाँ पे नहीं जा सकती अकेले क्योंकि लड़की हूँ. तो तुम में वो कोमलता नहीं है लड़कियों वाली. कहा जाता है कि मैं जितने भी काम करती हूँ वो मर्दों वाले काम हैं, रनिंग करना या फिर ज़ोर वाला कोई काम करना. ये भी बोला गया कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम इस तरीके के काम करती हो. तो काफ़ी सारी चीज़ें घर पे, कई बार मेरा स्कूल बंद करवा दिया इसी चक्कर में, कॉलेज बंद करवा दिया. इस जर्नी शुरू हुई सवालों की. धीरे धीरे अभी इस प्रोसेस में मर्दानगी को देखने का नज़रिया जो है वो काफ़ी हद तक बदला है. बचपन से ही मैं बड़ा हो रहा था, तब मुझे समझ में आया कि लोग मतलब हर एक बात पे मेरे को बुली करते थे. मेरा तौर तरीका रहना, तो उसके लिए उनको लगता था कि ये इसमें कुछ तो अलग है, तो चिढ़ाते थे स्कूल में. जब मुझे पता चला कि मेरे पापा रेसलिंग करते हैं, मुझे जब फाउंड फोटोज़ मिले तब मुझे लगा कि ओके वाह कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ तो करते थे. और मैं फिर देखा कि मेरे ग्रैंडफादर क्या करते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर क्या करते हैं. तब मुझे पता चला कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने टाइगर को किल किया था. तो फिर मुझे समझा कि ओके ये किधर से आया है. कि मेरे पापा के फ़ोटोज़ जैसे मुझे मिला था, तब मैंने देखा कि इनकी तरह मैं पोज करके देखता हूँ कि ये मेरे को कैसे रिफ्लेक्ट करता है कि मैं उनकी तरह बन सकता हूँ क्या. पर मैंने वो सिर्फ पोज किया है, पर मुझे लगता है कि मैं उनकी तरह नहीं बन सकता, क्योंकि ये एज वो अलग तरीके से एक मर्दानगी को एक्सप्रेस करते हैं उनके थॉट की तरफ से और उनका एक प्राइड की हिसाब से. What was really amazing was, when he spoke about his journey of working through that, every time he spoke, I saw similarities in the way that my own journey of the idea of what it meant to be able to express, not being able to express, and still leading a life, and then figuring out the idea of self-acceptance, which the thing was, both of us used that same word, the idea of self-acceptance, and then leading to what it means to then invite people in. I'm more interested in how state is masculine in so many ways. These parents here are huge because
they're screaming for you to look at them, to acknowledge them, and to remember that the body underneath the parents, they may not be here today. We don't know where they are. Many are here, have perished. Many will perish in the future. But while the parents are here, they are a testimony to everything the bodies underwent, from frisking that were sexual, in nature, from humiliation, by asking us to take it off at every checkpoint, just under the suspicion of carrying something like a gun or a bomb while we were growing up. I think that the magic feeling of when you're in a room full of strangers and you don't know what you're going to experience, and what you're experiencing suddenly kind of draws this thread between all of you. And I feel like having the filmmakers in the room, moving from film to film to film, from such different kind of points and peaks of emotion, but then feeling that thread continuing. ત્રણ મેસ્ક્યુલિટીના એવા જોબ પ્રોફેશન તારા હિસાબથી? पायलट, आर्मी, थ्री टॉप फेमिनिटी जॉब? टीचर, एरोस्पेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. It was a difficult film to make, also because when you make a personal film, there is always this constant negotiation which you have to make, what to show, what to shoot, what to keep, okay, how will it be perceived. I felt safe space where I could show this film. So that is very important. When I say I want to work on labor and caste, it's been explored a lot. There's so much data available. It's just that, the representation from our community is less, so our perspective lacks somewhere. Seeing beyond data is something which I want to highlight here, to see the aspirations and negotiations made by these people. ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದವಾಗ ಆ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸೌಂಡ್ ಟಣ್ 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 ಅಂತ ನಾದ ಬಂದಾವಾಗ ಅದು ಗಂಡು ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಟಣ್ 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 ಅಂತ ಮೇಲ್ಸ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಅಂತಲ್ಲ, ಹೈ ನೋಟ್ಸ್ ಉಂಟಾದವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವರ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಶಿಲ್ಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಲ್ಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಗಾಂಧಿ ತಾತನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಹಿಸ್ಟರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಥರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೆಲ್ಟಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ, ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಮ್ಮನಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗಂಡಸು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಯಿತು. We were wondering whether we should make it more open, whether we should say it's a fellowship on gender, but we chose to stay with the word masculinity, and I think that's provoked a particular kind of response. We were very kind of taken aback to see that a lot of the applications that we received were not from Delhi, Bombay, Bangalore or urban centers actually. They came from smaller towns, peri-urban contexts, and in very different languages. So the applications that came to us really sort of weren't speaking this usual English theoretical sort of jargon around masculinities and gender, but really drew from people's lived experiences.
ओके, क्योंकि ये हर कोई पार्ट एम्प्टी था, उसमें कुछ था नहीं और किसी की तरफ पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा था, ना किसी का साथ दे रहा था, तो ये बिल्कुल अकेला था। तो मैंने उसे ऐसा शेप दिया कि जैसे शेल्टर बना दिया, वो किसी का हो नहीं, तो कोई आए तो वहाँ पे रुके तो कोई कंफर्ट फील करे या छाव फील करे। Kind of started from this one point where this conversation between my mother and I, she would one day just comment that मैंने संज जन्म दिया है, संज, and I was really curious that what do you mean by संज, and then she told me Sanj is this kind of vessel that is in the house and it takes a big part of the house, but we really don't know what to do with it. So the work takes from my own experience of transness as well. When I think about both masculinity and femininity and not fitting in either or. It's a dream consciousness game and I'm trying to build it in an escape format because I've consistently felt like I'm escaping. ಬಟ್ಟೆದಾರಿ ತೆರೆ ತೆರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಕೆ ಮರೆ ಮರೆ, ಬಟ್ಟೆದಾರಿ ತೆರೆ ತೆರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಕೆ ಮರೆ ಮರೆ, ತೆರೆಯುತ್ತ 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 ಖಾಲಿ 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 ಬಯಲು, ನಿಲ್ಲದ ಬಯಲು, ಓಡುವ ಬಯಲು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಏನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆ ಮಿಥಾಲಜಿ, ನನ್ನ ಕತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ, ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಗಜಿಬಿಜಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೀನಿ. ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಾವ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಂಗೆ ನಿಜ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಡ್ಬೇಕದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಇವ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಮೀಸೆ ಭಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಇವ್ನಿಗೆ ಏನು ಬಂತು, ಈ ಗಡ್ಡ ಭಾರ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಏನು ಬಂತು. ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಣಿ 56 ಇಂಚಿನ ಗೊಂಬೆಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮುಟ್ಟುಗರೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಡ್ರಾಮಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಗು. जाना तो इका है कमर बंद गई जा तुम्हारे के छोटे रहते तो ऐसे गले में डालते कमर तक पहुंच जाते, अब नहीं चाहिए। तो मैंने बचपन से लेके हम कह सकते हैं 25 साल की उम्र तक हमने मर्दानगी या दबंग मर्दानगी को बहुत ही क्रूरता के साथ देखा है। मेरे लिए मर्दानगी बहुत बुरा अनुभव रहा मर्दानगी को लेकर। मुझे लगता है मर्दानगी बहुत क्रूर थी, बहुत दबाव वाली थी, बहुत घुटन वाली। महिलाओं का अभी भी कोई अस्तित्व और वजूद नहीं है जिस इलाके में से मैं आती हूँ। तो मुझे लगा कि जो मरी हुई औरतों को जिनका मेरी ज़िंदगी में बहुत योगदान है उनको हम कैसे दर्ज करें, और ये थिएटर मेरे लिए एक बहुत अलग अनुभव था। पर मुझे पता नहीं, मैंने नौकरी छोड़ने के बाद बहुत सारी फेलोशिप ली, पर मेरी ज़िंदगी की सबसे प्रिय फेलोशिप है मिरर फेलोशिप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसने मुझे तरासा है और मुझे अंदर तक तरासा है। I can see this that how from beginning to year there has been constant support but a lot of investment by both of you and the entire team of Mara. So I want to thank Mara, and last 3 days there has been so much support and so much belongingness. So thank you so much for creating a safe space where we could present our work, which is so personal. So yeah, I want to take this opportunity publicly to acknowledge. Viva la